Assalamualaikum everyone, my name is Hassan Slim and I am your computer course instructor for grade 7. Today we are going to start our lecture number 4 of computer education for grade 7. In the last lecture, in lecture number 3, we have started the exercise of unit number 1 but we weren't able to complete it in time. So today in lecture number 4 we are going to continue the exercise from where we have left it. We were on the question number 6, and what is question number 6? Match column A with column B and write the matching pairs number in column C. अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉलम ए के अंदर जो जो से नेम्स हैं वो कॉलम बी के नेम्स कौन से नेम्स के साथ इंटरलिंक्ड हैं या रिलेट करें या उनके साथ मैच करें या उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके साथ मैच कर रही हैं, और उसका आंसर हम सी के अंदर लिख देंगे मैच करके. So the first thing is motherboard. Motherboard is linked with mainboard and they are written in a format like 1 is from column A and D is from column B. So they have combined it and write it like this. Now we are going to complete the rest of them. So the system unit is interlinked with CPU, AGP slot, security system. About system unit we have read in the chapter that it is like a box. So system unit is like a box and the box is on number G. So for your ease I am going to write it in the Microsoft Word. Second, let me just zoom it. Number 2, system unit is interlinked with box and box is on G. And number 3, brain. Brain is interlinked with CPU, central processing unit. As you all know, central processing unit is the brain of a computer. A. Fourth one is libraries. Libraries, we have read in the chapter that all the libraries, in the libraries there are books and all the books have a barcode, and in the library they have a barcode reader. So number 4 is connected with J, barcode. What is on number 5th? Graphics 3D card. Graphic 3D card have AGP slot, which is the fastest among all the slots. So it is interlinked with B. Number 5th is B. Number 6th is fingerprint reader. Fingerprint reader is used for security purposes. So on this number 6th there is C. It is linked with C, security system. Peripherals, as we all know, peripherals are the input output devices, so it is interlinked with I. 7 is interlinked with I. Okay. Traffic policeman works like a control unit, so there must be a control unit and it is on E. 8 is interlinked with E. Mechanical agents are the robots. So where are the robots? F. 9 is with F. And ROM is non-volatile. And what is non-volatile? Non-volatile means
the memory that is stored in ROM, it will not be write, it is only a read only memory. You cannot change it. And if the light goes off or electricity goes shut down or a PC goes turned off accidentally, then the data on the ROM will not be affected. X is interlinked with H. So these are the answers for question number 6. And the next question is label the diagram. Actually this is a diagram for motherboard. So let's label it. So these are the slots of PCI slots, and this is a slot of AGP. This is a fan, this is a processor, and these are the slots for RAM, and these are the RAM slots. You can cross check this diagram by looking into the chapter here. These are the PCI slots, this is a AGP slot, these are the peripheral ports. Peripheral ports means input output ports where mouse and keyboards are connected. This is a fan, this is a processor, and these are the slots of RAM, sockets for RAM, not slots, sockets for RAM. And what is the next is a lab activity. Write the names of peripherals which are attached to your computer. Okay, peripherals means input output devices. First one you can write it keyboard, second one you can write mouse, third one is speakers, fourth one is printer or scanner. So these are 4 devices that you can write the names. Lab activity, control unit. Who is the control unit in a traffic system? Okay, the control unit in a traffic system is a traffic sergeant or a warden. So this is the answer. What does he do? He controls the traffic. Answer is he controls the traffic. Who is the control unit in a school assembly? Headmaster is you can write it. Headmaster is the control unit in a school assembly. What does he do? He conducts and controls the school assembly. I'm just telling you the answers orally, or I am wondering should I write the answers or not. I think I also write the answers so that you will easily understand. Question number 620. So these are the answers for question number 6, and for question number 7, question number 8. So what was the question number 8? Write the names of peripherals which are attached to your computer. First one was mouse, second one was keyboard, third one was scanner, and fourth one was speakers. Now let's look at the question number 9. What was the question number 9? Who is the control unit in a traffic system? Traffic sergeant. I'm just writing the answers, not question.
or you can write it warden, traffic warden. What does he do? He controls the traffic who is the control unit in a school assembly? Headmaster is the control unit in a school assembly. And the next question, what does he do? He conduct and control the school assembly. Okay. Lab activity for barcode reader. This is the question that you can do it by yourself. So what is the next lab activity? Checking processor speed and RAM size. Okay, now we have to check the processor speed and RAM size. So I'm gonna tell you how you are going to check your computer processor size and RAM size. Go to my computer, right click on it, and this menu bar will be open, and go to the properties. Left click on the properties. This window will be open. Now you can check the processor size. So this is my PC processor size, Intel Core i7 2.4 gigahertz. And what is the RAM? Installed memory RAM 6 GB. From here you can check your processors and RAM size, and now you can note it down according to your computer requirements. Okay, check processor speed and RAM size checked. And the next question is lab activity robots. Allocate the given words phrases to the right column. Okay, so these are the words 1 2 3 4 5 6 7 8 3, 4. These are the 8 words. 4 words are going to be on the right side and 4 words are going to be on the left side. Things a robot can do. वो चीज़ें जो रोबोट कर सकता है. Things a robot can't do. वो चीज़ें जो रोबोट परफॉर्म नहीं कर सकता. Breathing. Robot can't do. Robot can't breathe. Dishwashing. Robot can do. Thinking. Robot के पास कोई दिमाग नहीं होता, तो इसलिए रोबोट can't think. Walking. Robot can walk. Sleeping. So this is the thing that robot can't do. Robot can't sleep. Welding. Robot can weld. Painting vehicles. Robot can paint vehicles. Getting tired. Robot doesn't get tired. So I'm going to write the answers for you so that you can easily see through the answers. Can do. Robots can do. Robots can do. Dishwashing. Robot can do dishwash. Walking. Robot can weld. Robot can paint vehicles. And what are the things robot can't do?
Robot can't breathe, robot can't think, robot can't sleep, robot can't get tired. Breathing, thinking, sleeping, and getting tired. This was the last question of our unit number 1 exercises. Now we are going to start our next unit, that is unit number 2, software basics. Unit number 1 was about the hardware basics, and in the unit number 1 we have studied a little definition of software. What was the software? Software was the set of instructions that was given to a computer. Introduction to software. Computer cannot perform any task with the hardware alone. It requires instruction to perform a task. The instructions are called software. So in the first paragraph he is saying that कंप्यूटर खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता हार्डवेयर के साथ मिलके. उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, कोई ना कोई गाइडलाइन चाहिए होती है कि किस तरह ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है. और वो जो इंस्ट्रक्शंस हम हार्डवेयर को देते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्ले गेम, वॉच मूवीज़, ड्रॉ इमेजेस एंड पेंटिंग एक्सेट्रा. सॉफ्टवेयर बनाए क्यों जाते हैं? सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूज़र जो होता है, यूज़र्स कौन है? यूज़र्स हम लोग हैं. ताकि यूज़र्स कंप्यूटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सके, गेम्स खेल सके, मूवीज़ देख सके, इमेजेस और पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ कर सके, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. What is system software? System software are programs that control and direct the operation of a computer hardware. These software are essential part of the computer system. A user cannot work on a computer without system software. So system software कौन से होते हैं? System software वो होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट ऑपरेशंस, कंप्यूटर के डायरेक्ट ऑपरेशंस को जो कंट्रोल करते हैं ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. मीन्स के जो इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज़ होते हैं. विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? लाइनक्स होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इस तरह के काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की समझ आ गई हमें. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, उसके ऑपरेशंस को. कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो वाले प्रोग्राम्स को. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. फ्यू इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो. ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी, प्रोग्राम्स. Operating systems. Now we are going to discuss these types of system softwares one by one. First one was operating system, second one was device drivers, and third one is utility programs. We are going to discuss the first operating systems. First type of a system software, that is operating system. Operating system is a system software. It is just like the soul of a computer. It is a collection of programs that supervises and controls overall functions of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी की एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है.
ये कंप्यूटर की एक किस्म की रूह होती है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ programs that supervises and controls overall function of a computer. collection of programs जो कि supervise कर रहा होता है बाकी functions के ऊपर, कंप्यूटर के बाकी functions के ऊपर ये supervise कर रहा होता है. Operating system also organize all the data and run other applications in a computer. It creates a link between a user and the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और बाकी एप्लीकेशंस को भी रन कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर. वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर. लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैक ओएस आर सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. So these are 4 examples of operating systems. Operating system क्या होता है? Operating system is just like a software. It is the soul of a computer. Operating system collection of programs है जो कि supervise कर रहे होते हैं बाकी कंप्यूटर के functions के ऊपर. I hope this is clear to all of you. और ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज करता है सारे डेटा को और बाकी एप्लीकेशंस भी रन कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर और लिंक क्रिएट करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में. इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? booting and providing a user interface. Operating system manage the startup process of a computer. It loads the system files in the RAM of the computer and provide a user interface so that user can easily work on the computer. Okay, इसके अंदर booting and providing a user interface. इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के अंदर काफ़ी हेल्प आउट करता है. वो सिस्टम फाइल्स को लोड करता है और रैम के ऊपर लोड करता है और यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर यूज़र इजीली वर्क कर सकता है. अब जब हम सबसे पहले अपना कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले वो लोड करता है फाइल्स को और रैम के ऊपर लोड करता है. रैम के ऊपर लोड करके और यूज़र को फिर एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. जब विंडोज स्टार्ट होती हैं, विंडोज सबसे पहले फाइल्स लोड करके रैम के ऊपर लाती हैं और फिर यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं. फिर हम अपना डेस्कटॉप वगैरह सारा आइकन्स वगैरह, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्यू कर सकते हैं. सेकेंड इज़ मैनेजिंग प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली. It manage multiple applications by showing active application in foreground and other programs in the background. User can easily switch through these applications by clicking their buttons on the taskbar. Managing program. हम प्रोग्राम्स को किस तरह से मैनेज करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को किस तरह से मैनेज करता है, उसके अंदर किस तरह से हेल्प आउट करता है यूज़र को. वो इस तरह से करता है कि अब जब हम कंप्यूटर ओपन किया हुआ है हमने, हम अपना पीसी यूज़ कर रहे हैं, हम मल्टीपल एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं. जैसे वो आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, फ्रंट पे मैंने ये पीडीएफ फाइल ओपन की हुई है. मींस कि मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रन कर रहा हूँ. फ्रंट एंड पे मेरे पास पीडीएफ फाइल है, बैक एंड पे मेरे पास डॉक्यूमेंट फाइल है. मींस कि मैं दो एप्लीकेशंस रन की हुई हैं. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे हेल्प आउट कर रहा है कि मैंने इन दोनों एप्लीकेशन को किस तरह से मैनेज किया हुआ है. एंड द यूज़र कैन इजीली स्विच थ्रू दीज एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन द टास्क बार. एंड आई कैन easily switch between these two windows. So the third one is file management. Operating system allows a user to manage files and folders. The user can create, save, delete, copy, cut, paste and rename the files and folders easily. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं. हम उनका नेम चेंज कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट, पेस्ट, रीनेम. वी हैव ऑल द ऑप्शंस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. As I can show you, this is a file.
I can cut it by clicking on this option. I can copy it, I can delete it, I can rename it, and I have all these options whatever I would like to do with this file. So this is all because of operating system. Next is configuring devices. When a computer starts, operating system checks all the devices and load their drivers. When a new device is attached to a computer, operating system configures it. Okay. अब जैसे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले सारे डिवाइसेस को चेक करता है कि अगर कोई न्यू डिवाइस अटैच हुई है हमारे पीसी के साथ, तो सबसे पहले वो उसके ड्राइवर्स लोड करेगा और उनको इंस्टॉल करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम automatically checks all the devices and load their drivers and install those drivers. Without the drivers, we cannot use the new devices which are attached to our computer. Now, operating system helps us in configuring devices by loading their drivers and installing it. It installs its drivers so that it can work properly. Okay, as I said before, that without installing the drivers of the devices, a device cannot work properly. So operating system helps in configuring devices, file management, managing programs, and booting and providing a user interface. I hope this is clear to all of you. So in this diagram they have also mentioned operating system helps a user to work with multiple programs and applications simultaneously. It controls flow of data, input and output operation, and configures devices, manages files, and manage the startup process. So these are 4 operations that operating system performs, and I hope this is enough. And in the next lecture we will continue from device drivers. Allah Hafiz.